marketing structure. In this subject, I'm going to tell you about the different market structure. Like in a market structure, we are going to study about the how many types of a market structure are designed for an economy system, as well as to know about which kind of a product is market. In a market, we are going to purchase which kind of a product in which kind of a market, right? In a market structure, here we are more emphasis on a different type of a market system, as well as to know about the pricing strategy under different market structure, right? Here I'm going to tell about the market economy structure. कितने टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, और पहली चीज तो हमें ये जानना है कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्यों और क्यों डिजाइन किया गया है। इन अ इकोनॉमी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, आपका इकोनॉमी मतलब where we have to purchase goods, and in context to sell that good we are getting some benefit, और साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। इनके बिहेवियर को अगर हम देखें, बायर एंड सेलर के बिहेवियर को देखें, तो अंडर दिस कंडीशन जो आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो तय किया जाता है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, राइट? कि हमें पहले ये जानना है कि हम हमारे लिए मार्केट कौन सा है, और अगर हमने मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट सिस्टम तय कर लिया तो किस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तय करेंगे, और साथ में उस मार्केट स्ट्रक्चर में कौन से प्रोडक्ट सेल आउट होंगे। फाइन। सबसे पहला जो है, the condition which is follow in a market structure, that is a market economy, price is conditions by market structure. There are distinct forms of market structure, जैसा मैंने आपको बताया कि various kind of a market structure in a economy system कैसे होएगा, ईच एंड एवरी मार्केट को हम पहले डिस्कस करेंगे और उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को तय करेंगे, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट? परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इज अकॉर्डेड ग्रेट इंपॉर्टेंस एज अ मार्केट स्ट्रक्चर, राइट? As a theoretical mode, classical and neoclassical economists assume condition of a perfect competition. ये एक सिर्फ यू कैन से इट इज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट किसका, परफेक्ट कंपटीशन का। एक्चुअली इट इज नॉट कंडक्टेड इन अ रियल लाइफ, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से या क्लासिकल या नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसको डिजाइन किया था। इट कुड बी पॉसिबल, right? Market situation vary in their structure. Different market structure channel the behavior of buyer and seller, and further different prices and trade volume are fashioned by different market structure. Again, all kind of a markets are not equally efficient in the exploitation of resources, and consumers welfares also varies accordingly, right? Now first we are going to know about what is exactly the market situation, and after that we are going to study about the different market structure in a economy system. फाइन। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका मेन फोकस होता है टू नो अबाउट द प्राइसिंग प्रोसेस, हाउ वी कैन डिसाइड अबाउट द पर्टिकुलर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट, एंड दिस गिव्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू नो अबाउट द प्राइसिंग strategy of a particular product, right? Now, the type of market structure on the basis of the nature of the competition. किस तरीके का कंपटीशन है और उसके हिसाब से किस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए। Traditionally, the nature of the competition is assessed to be fundamental criteria for distinguishing different type of a market structure, right? The degree of competition may vary among the seller as well as the buyer in a different market situation. That depend on
how much degree of competitions are associated with a different kind of a market, and we are going to like accordingly the buyer situation कि buyer कैसा है, उसका behavior कैसा है, उसके according हम क्या करते हैं, market situations को तय करते हैं. The nature of the competition among the seller is viewed on the basis of a two major aspect: the number of firms in the market. Fine. दूसरा जो है आपका द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट स्ट्रक्चर को तय करते हैं वेदर प्रोडक्ट should be homogeneous or a differentiated, or you can say it's a heterogeneous product. इंडिविजुअल सेलर जो है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल है मार्केट सप्लाई पे, and his hand on a price determination basically depend upon these two factors. पहला चीज तो हमने आपको बताया कि जो फर्म है वो कितने कॉम्पिटिटिव हैं और कितने अवेलेबल हैं ना इकोनॉमिक सिस्टम, जिससे आपका डिफरेंट मार्केट सिचुएशन तय होता है, और साथ में प्रोडक्ट किस तरीके का है, वेदर इट इज अ होमोजेनस और अ हेट्रोजेनस, दैट डिपेंड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट्स we have to decide about the market structure in the economic system, right? Here there are a following types of the market structure which present on the basis of a different kind of the characteristics, on the basis of a competition as well as the product differentiation. Fine. Here there is a four kind of a competitive market present in the economic system. The first one is a known as a perfect competition. Another one is known as a monopoly. The next one is known as a oligopoly, and the last one is a monopolistic competition. Now, the next one is a perfect competition and monopoly are two extremes of the market situation. Perfect competition, as the name suggested here, here there is a you can say like 100% competition between a marketer, industry, or a companies, like, but it is not possible in a real life situation. Fine. As well as the monopoly condition is not also possible uh, in a real life situation, but still in a India it is railway is one of the example of the monopoly, right? Other forms of the market such as the oligopoly and monopolistic competition fall in between these two extremes. Oligopoly and monopolistic competition are the market situation which is categorized under the situation of the imperfect competition. Right now, the next one, the first we are going to study about the perfect competition market. What is exactly the perfect competition market? According to the definition of the perfect competition market, what is exactly the perfect competition? By the defined by the Marshall, right? The first thing that is defined by a Marshall regarding perfect competition market, the more nearly perfect a market is, the stronger is the tendency for the same price to be paid for the same thing at the same time in all parts of the market. Right? According to Marcel, it is defined here that कि जो परफेक्ट मार्केट होता है वहां पे जो टेंडेंसी होती है प्राइस की, वो किसी भी होमोजेनस प्रोडक्ट के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है, राइट? एट द सेम टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट, अगर हम बात करें तो जितने भी मार्केट के आप होमोजेनस प्रोडक्ट कर रहे हो उसमें जो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर है वो सभी भी प्रोडक्ट के लिए सिमिलर टाइप का है. Fine. Thus, perfect competition is a market situation. Here, a colossal amount of a buyers as a sell, as seller possessing complete knowledge of the market come together to afford the similar product. Fine. In perfect competition, an equilibrium price exists in the market and a firm are free to take part in and to exit the market. Right? जो यहाँ पे perfect competition का एक almost आपको briefing कर दिया गया है the characteristics, but in detail we are going to study about the characteristics of the perfect competition, as well as this part is a very much important to know about the features of the perfect competition market. Right here, the first number is larger number of these buyer and seller. In a perfect competition market, you can say
there is a large number of a buyer and seller are present in a market. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो कंपटीशन है that is free enough. Buyer and seller are free enough to influence to each other by price of the product, which is determine the collective effect of the buyer and seller. Here, the next characteristics of the perfect competition is the homogeneous product. In a perfect competition market situation, the product is a similar kind of, right? It means they are identical, they are homogeneous, and firms are ready to prefer to sell the homogeneous or identical market product in the market. Sorry. Next, no firm can change any price more than the price prevailing in the market. The condition is that कि कोई भी फर्म जो प्राइस है वो इंडस्ट्री की आपने जो तय कर रखी है फॉर दैट प्रोडक्ट आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं. फाइन. तो दिस इज व्हाट वन ऑफ द कंडीशन रिगार्डिंग अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म. फाइन. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म का क्या मतलब हुआ कि कोई भी उस प्रोडक्ट के लिए जो भी इंडस्ट्री है वहां पे वो एंटर हो सकती है और कहीं भी जब भी आपका एग्जिट करने का मन हो तो आप लीव द इंडस्ट्री. दैट डिपेंड ऑन द फर्म or organization itself. There is no legal foundation or a government regulations on entry and exit of the firm in that kind of the market. Fine. Hence, if the industry is occurring profit, new firm will enter into the market. No foundation for any new upcoming or a upbringing market for a particular product. In another way, if the industry is suffering loss, many firm will leave the market. Right? Now, the next one characteristics which is also important, that is a perfect knowledge of a market condition. Since all the buyers and sellers hold a perfect knowledge of all the market condition, but here there is a free movement of a buyer and seller, and for that the advertisement and selling method do not have any effect on the customer buying behavior, because here there is a much knowledge about the market itself by seller as well as the customer. राइट. इट मीन्स अगर मैं आपको ये बोलूं कि एज aspect of the customer or a seller, if both competitor in the market have a sufficient knowledge about the market condition, so there is no need for a much advertisement and selling methodology to promote that product in that market, right? Now the next one is perfect mobility of the factor of the production, right? As all the factor of the productions are perfectly mobile, factor of production are free to shift to any organization where they are not being paid a fair price. It means कि जो भी आपके प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनका परफेक्टली मोबाइल होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, राइट? और उसके लिए आप you are not able to pay fair price for that. You are free enough to mobile the resources from one place to another place as well as from organization also, right? The next one is the independence of the decision making. All buyers and sellers are fully independent to take the decision according to the benefit of the either, if you are talking about a seller aspect or a producer aspect or a buyer aspect, right? Both are free to take their decision independently. None of them is committed to anyone. ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रेशर है किसी के ऊपर. सेलर आर सफिशिएंट और अ प्रोड्यूसर आर सफिशिएंट टू टेक देयर डिसीजन by their own benefit, right? Similarly, the customer are also independent because there is a kind of what a homogeneous product. You can go for another next one which is an identical product produced by any other organization, right? Hence, the buyers are free to purchase the required commodity from any seller, and seller are free.
Seller are also free to sell their commodity to any buyer or buyers. The price of the commodity at a particular time tends to be equal all over the market, which all the firms have to follow. Right? Now, the last one is a absence of a selling and transportation cost. This cost is not associated to determination of the price. इट मीन्स जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, एब्सेंस ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट नॉट प्राइस, सेलिंग और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट को ट्रांसफर कराया जाता है फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, जहां से डिमांड होती है, उस प्राइस को हम इसमें इग्नोर करते हैं, विच इज नॉट एसोसिएटेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बट एक्चुअली इन अ रियल लाइफ द प्रोडक्ट जो प्राइस होती है उसमें आपका सेलिंग कॉस्ट एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, डैमेज कॉस्ट, ऑल कॉस्ट आर एसोसिएटेड, जो कि एक तरीके से हिडन होता है और ये प्राइस स्ट्रेटजी को तय करता है. Fine, but here there is not as such the role of the cost on the determination of the price. So here there is a various feature which is associated to the perfect competition market. First, I told you about the free entry and exit of the firms in the industry, or you can say the market. जो मैंने आपको बताया, कोई भी अगर चाहता है तो एंट्री ले सकता है और कोई एग्जिट चाहता है तो ले सकता है. देयर इज नो एज सच अ गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन ऑन दैट काइंड ऑफ अ फर्म इन द मार्केट. सेकेंडली मैंने आपको बताया लार्जर नंबर ऑफ सेलर एंड अ बायर. यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें लार्जर नंबर ऑफ सेलर हैं एंड बायर है, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन इज एज सच अ रियलिस्टिक मार्केट. नेक्स्ट जो है आपका होमोजेनस प्रोडक्ट. होमोजेनस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, और आइडेंटिकल प्रोडक्ट इस मार्केट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है. राइट, द नेक्स्ट वन इज अ परफेक्ट मूवेबिलिटी ऑफ द फैक्टर. कोई भी जो फैक्टर दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रोडक्शन दैट कैन बी मूवेबल फ्रॉम ओरिजिन टू द नेक्स्ट प्लेस or from a different part of the organization, right? So there is no as such a fair price paid to for mobility of the production factors, right? The next one is a both competitor like buyer and seller, they both are independent in such kind of a market structure, right? They can take a decision on the basis of the whatever the uh, price strategy adopted by a producer as well as the consumer itself, right? This is what the features of the perfect competition market. That's all about your only what is perfect competition and what are the features which is associated to the perfect competition market. Fine. And after that, we are going to study in a next video that what how we are going to determine the pricing strategy under short run of the perfect competition market as well as in a long run perfect competition market. इन सारे वीडियोस से आपको एक पॉइंट जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का वो क्लियर हो गया कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, एज वेल एज मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर क्यों हम बनाते हैं, क्यों हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है. ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिए. Student, thank you for watching my video.